Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. Also follow me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. In this video, I will explain every figure of speech and its meanings with examples as well. So stay tuned. So what is the meaning of figures of speech? A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression to produce a better effect. मतलब फिगर ऑफ स्पीच एक ऑर्डिनरी फॉर्म से हट कर एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है जो बेटर इफेक्ट देता है आपके सेंटेंसेस को. It can be a special repetition, an arrangement, or omission of words with literal meaning or a phrase with specialized meaning. मतलब फिगर ऑफ स्पीच या तो स्पेशल रेपिटिशन होता है वर्ड्स का, या अरेंजमेंट्स होता है, या ओमिशन होता है वर्ड्स का उनके मीनिंग के साथ. So, a figure of speech is a deviation from the ordinary use of words in order to increase their effectiveness. Basically, it is a figurative language that may consist of a single word or phrase. It may be a simile, a metaphor, or personification to convey the meaning other than the literal meaning. A figure of speech is an integral part of any language. These are actually a word or a phrase used in a distinctive way to produce a rhetorical effect. मतलब फिगर ऑफ स्पीच इंटीग्रल पार्ट है कोई भी लैंग्वेज का. ये एक्चुअली वर्ड या फ्रेज होते हैं जो यूज़ होते हैं अलग वे में ताकि रिटोरिकल इफेक्ट बने. In simple terms, it is a phrase whose actual meaning is different from its literal meaning. मतलब ये phrase है जिसका actual meaning अलग होता है उसके literal meaning से. There are different kinds of figures of speech. First is personification. In this figure of speech, human characteristics are attributed to an abstract quality, animal or inanimate object. पर्सोनिफिकेशन तब होता है जब आप एनिमल या ऑब्जेक्ट क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ दे देते हो जो सिर्फ ह्यूमंस के पास होती है. पर्सोनिफिकेशन इज़ व्हेन यू गिव एन एनिमल और ऑब्जेक्ट क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ दैट only a human can have. For example, we often use the phrases like the howling wind, dancing leaves, time flies, etc. Some of the examples are the wind howled in the night. My alarm clock yells at me every morning. Next is metaphor. It is a figure of speech where we directly compare seemingly unrelated subjects. मतलब मेटाफर ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं अनरिलेटेड सब्जेक्ट से. अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड फॉर इम्प्लाइंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन बट इन जनरल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मतलब मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है जो यूज़ होता है कंपैरिजन करने में दो चीज़ों में जिसमें कुछ कॉमन हो बट इन जनरल ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. नेक्स्ट, ऑल द वर्ड्स स्टेज. नेक्स्ट, ही इज़ द स्टार ऑफ आवर क्लास. Next figure of speech is simile. A simile is a figure of speech that compares two things that are different from each other but have similar qualities. सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है जो कंपेयर करता है दो चीज़ों को जो अलग होता है एक दूसरे से बट सिमिलर क्वालिटीज़ होती हैं. दीज आर जनरली फॉर्म्ड थ्रू द यूसेज ऑफ द वर्ड्स एज और लाइक. मतलब सिमिली जनरली फॉर्म होती है वर्ड्स एज और लाइक से. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन. Next, her expression was as cold as ice. Next, he fights like a lion. Next figure of speech is alliteration. Next figure of speech is alliteration. Alliteration is a type of figure of speech in which a sentence consists of a series of words that have the same consonant sound at the beginning. मतलब alliteration type of figure of speech है जिसमें sentence में series of words होते हैं जिनका same consonant sound होता है beginning में. It is the repetition of
initial sounds in neighboring words. Alliteration draws attention to the phrase and is often used for emphasis. मतलब alliteration repetition होता है initial sounds का जो उसके neighboring words होते हैं उनका. For example, sweet smell of success. So इस sentence में initial sound S की repeat हो रही है, sweet smell of success. Next, बिगर एंड बेटर. इसमें बी की इनिशियल साउंड रिपीट हो रही है. नेक्स्ट इज शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. सो इसमें भी एस साउंड रिपीट हो रही है. Next figure of speech is onomatopoeia. It is a word that actually looks like a sound it makes and we can almost hear those sounds as we read. मतलब onomatopoeia word है जो actually sound के जैसा होता है, जैसी sound होती है वैसा ही word होता है और हम almost सुन सकते हैं वो sound जब हम read करते हैं. It involves the use of words that imitate the sounds associated with the action or object referred to, that is his, clap, एक्सेट्रा. मतलब ओनोमेटोपिया इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ वर्ड्स को जो इमिटेट करते हैं साउंड्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं एक्शन से या ऑब्जेक्ट से जिससे रेफर्ड होते हैं, जैसे कि हिज, क्लैप, एक्सेट्रा. लुक एट द एग्जाम्पल्स. द बजिंग बी फ्लू ओवर माई हेड. Next, the stone hit the water with a splash. Also, guys, do comment the figure of speech in every sentence, जैसे simile, metaphor, alliteration and all. सबके examples दिए हैं, उनमें underline करना है figure of speech. Next figure of speech is hyperbole. Hyperbole is a figure of speech that consists of an exaggeration. It may be used to evoke strong feelings or to create strong impression, but is not meant to be taken literally. Means hyperbole is a figure of speech. For example, there is enough food in the cupboard to feed an entire army. In this example, the speaker doesn't literally mean that there is enough food in the cupboard to feed the hundreds of people in the army. For example, I could sleep for a year. I was so tired. Next, she is older than the hills. Next, I have told you a million times to not touch my stuff. Next figure of speech is irony. Irony or sarcasm is a figure of speech in which the usage of words conveys the opposite of their literal meaning. These are often used in a humorous manner. मतलब irony या sarcasm figure of speech है जिसमें जो word use हुआ है उसका opposite meaning convey करता है और ये mostly humorous manner में ही होता है. मतलब मजाक मजाक में चीज़ें बोल जाना is irony. Example, your hands are as clean as mud. Next, the dinner you served was as hot as ice. Next figure of speech is oxymoron. An oxymoron is when two words are used together in a sentence but they seem to be in contrast with each other. मतलब ऑक्सीमोरॉन तब होता है जब दो वर्ड्स यूज़ होते हैं इकट्ठे सेंटेंस में बट दिखते एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हैं. An oxymoron is a figure of speech that willingly uses two differing ideas. मतलब oxymoron figure of speech है जो willingly two different ideas use करता है. Example, life is bitter sweet. इस सेंटेंस में दो contrasting ideas डिपिक्ट हो रहे हैं कि लाइफ बिटर भी है और स्वीट भी. Next, they knew they could feel the joyful sadness on his arrival. Same इस sentence में भी contrasting ideas depict हो रहे हैं. So this was all about figures of speech. I hope it is clear. I will discuss some other topic in my next video. So till then, stay tuned and please subscribe to my channel and also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. Also, if you want to suggest some topics, then you can DM me on Instagram or email me. Each and every detail is given in the description box. Please subscribe to my channel. Thank you.